फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी कंप्यूटर क्लास में। आज हम लेकर आए हैं माइक एसक्यूएल सर्वर। इस सर्वर के हेल्प से आप सीख पाओगे कि हम कैसे अपने कंप्यूटर में डेटाबेस को मैनेज कर सकते। तो बिफोर डूइंग दिस नाउ फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल इट। तो फर्स्ट वी हैव टू नीड अ सॉफ्टवेयर। जैसे कि मेरे पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मेरे कंप्यूटर में, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी 8.0। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करना है, तब इसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे हम कैसे अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट वी क्लिक ऑन दिस नाउ, इज गोइंग टू बी इंस्टॉल। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। जब ये इंस्टॉल होगा तो कई सारे प्रोसीजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे फॉरवर्ड करना है। देखते हैं। जस्ट इज गोइंग टू इंस्टॉल राइट नाउ। It's a installer that configure the system to install it now. The installation time is depend on the system. It will take much more time or maybe a less time as per the system configuration. So it's mostly showing the time remaining like the 50 second. Before it is showing the 6 seconds to depend on the system. So let's we are going to install it now. Yes, again we have to click. Now it will be proceed. This is a installer 1.6 which is provided by Oracle. Now this is the first menu, first window where we have to choose a developer default, server only, client only, full या कस्टम। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी इसको डेवलपर और डिफ़ॉल्ट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। सर्वर के लिए आप ओनली सर्वर यूज़ करोगे। क्लाइंट पे क्लाइंट पर्पज़ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे। कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फुल में बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होंगी उससे इंस्टॉल होगा। तो आई विल जस्ट टेक फर्स्ट वन, developer default, and next. Now just we have to install this version manually. Go for the next again. Yes, we have required one more product. Yes, click on yes, then execute. These software are going to be installed inside the PC like ODBC, C++, connector, connector net, connector Python. Then click on the next button again. Go for the clip lock. What is the error is there? Finish it now. Let's see, again we are going to again start this software. What will happen? अब फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल नहीं होता तो हमें फिर से इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट करना होता है, जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को फिर से चेक कर सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन द यस बटन. Yes, we have got three things and four things here now. We will modify it, upgrade it now, add more. Like अब मैंने add more पे क्लिक किया तो मुझे सिर्फ सर्वर रिक्वायर्ड है, तो आई विल गो फॉर द सर्वर. सर्वर लिस्ट विल बी देयर. हमें वन बाय वन एक्सपेंड करना होगा. आई विल टेक लाइक 5.7 के वर्जन्स दिए हुए हैं. आई विल टेक लाइक 5.7 में 3.9. वी हैव टू शिफ्ट हियर नाउ. एंड एप्लीकेशंस में आपको कुछ लेना हो तो आप एप्लीकेशंस भी ले सकते हो. विजुअल स्टूडियो राउटर दे रखा है. कनेक्टर नीड है तो कनेक्टर ले सकते हो. मुझे कनेक्टर नीड है तो मैं कनेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक द कनेक्टर पाइथन. इन अ कनेक्टर वी हैव अगेन वन द थिंग्स.
Microsoft Visual C++ redistributable software that is needed for the MySQL. Okay, it will install successfully. Close it now, then click on the next button. Execute this button to install in your PC. Click on the execute. It takes some more time to install it now. Just going to the download from the server. Then again click on the next after downloaded. Then execute to installing this server. फिर बता देता हूँ ये डेटाबेस सर्वर है जिसमें आप डेटाबेस मैनेज कर सकते हो। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके इसमें डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। ये एज अ बैकएंड वर्क करेगा और आप फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन को बैकएंड तक और बैकएंड से फ्रंट एंड तक रीच कर सकते हो। Then it has been installed, completed. Now click on the next, again next to configure the things. अब यहाँ पर आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टाइप सेलेक्ट करना है। हमने डेवलपमेंट के लिए बताया था, डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। TCP IP पोर्ट अपने आप आए हुए हैं, आपको सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यस, इट इज़ द मेन। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो तब आपसे पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड आपको माइंड भी रखना होगा। सपोज मैंने कोई भी पासवर्ड डाला, मैंने स्कॉट यूज़ किया, सेम पासवर्ड आपको नीचे लिखना है। फाइन, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। पासवर्ड आपका सेट हो गया है, अब नेक्स्ट करना है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन फिर से इंस्टॉल्ड होंगे और आपका सिस्टम पर सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट। लेट्स सी द डेटाबेस अब आपका इनिशियलाइज हो रहा है। इट में टेक दम लॉन्ग टाइम, इट्स डिपेंड ऑन द इंस्टॉलेशन, कितना टाइम वो यहाँ कंज्यूम करेगा। फिर उसके बाद सर्वर आपका स्टार्ट होगा, सिक्योरिटीज अप्लाई होंगी और आप स्टार्ट मेन्यू से एक्सेस कर सकते हो। एक शॉर्टकट मेन्यू आपको स्टार्ट मेन्यू में मिल जाएगा। Now it has been installed. Now click on the finish. Again next, your software has been installed. Let's see it will start or not. हम चेक करते हैं स्टार्ट मेन्यू में एक लिंक बना या नहीं बना है। सारा डेटा इंस्टॉल्ड हो गया है, MySQL हमारा तैयार है। आप कोई भी कनेक्टर और यूज़ करना है। सारे कनेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट, अगेन एग्जीक्यूट। नाउ आवर कनेक्टर इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड और मॉडिफाइंग एंड फिनिश। कनेक्टर भी हमारा कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। गो फॉर द स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम, MySQL पर जाएंगे और MySQL में आपने जो इंस्टॉल किया उस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास क्लाइंट का दिया हुआ है, हमें क्लिक करना है। देखिए मैंने बताया जो आप पासवर्ड डालो उसको आपको माइंड रखना है, उसी पासवर्ड से ये स्टार्ट होगा। मैंने स्कॉट डाला है, वही पासवर्ड मैंने एंटर किया
और मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। फुल स्क्रीन के लिए आप ऑल्ट प्लस एंटर कर सकते हो। फॉन्ट साइज के लिए आप फॉन्ट भी बढ़ा सकते हो। लेट्स सी आपको फॉन्ट साइज छोटा लग रहा था, फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो, या फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हो। सेम एज द लेआउट यू कैन सेट कलर्स, जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके फाइन। इस तरीके से हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो चुका है।